Hi, this is Dara Singh Khurana and welcome to the second episode of Voices of Compassion. आज का topic is super interesting. I am personally extremely excited to hear what the expert has to say today. So आज का topic is the impact of social media on relationships and mental health. इसके बारे में हम सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है because आज जिस टाइम में हम लोग रह रहे हैं it's not so important to be there for friends physically, but it's very important to be on the Instagram stories and tag your friends so that you can show that you are there for them. So let's see what our expert for today, Tanuja Babri, has to say about it. Hi Tanuja and welcome to our show. Hi, happy to be here again. How are you doing? I'm doing great. So, relationships, social media, इन दोनों की ना खिचड़ी मच चुकी है. So what do you have to say about it? What do you think is the impact of social media on relationships? तो आई थिंक पहले थोड़ा सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बात कर लेते हैं एंड लेट्स ट्राई एंड सी हाउ डज दैट इम्पैक्ट आवर लाइव्स. एंड एक ना उसको आई वांट टू मेक श्योर दैट हम उसको एक ब्लैक एंड वाइट लेंस से नहीं देख रहे. We can't approach presence of social media, especially in young people's lives, as something which is all bad. या फिर इससे आपके ग्रेड्स कम हो रहे हैं, इससे आपकी थिंकिंग अफेक्ट हो रही है, आप बुरे डिसीजंस कर रहे हो. इट्स नॉट लाइक दैट. अभी कैसे है कि जिस प्रकार से व्हेन वी ग्रो अप वी डिड नॉट हैव एक्सेस टू इंटरनेट और वी डिड नॉट हैव एक्सेस टू सोशल मीडिया, बट देन एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी हैज बीन पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप इन अ सर्टेन वे. For many young people right now, internet, social media, digital platforms have been a part of their years of development and growing up. So it's not something that you can do without. But of course उसके negative impacts है, उसके positive impact भी है. तो अगर negative impact के बारे में हम बात करने लगे तो फिर ये भी है कि उसका impact हमारे self image पर पड़ता है. मैं खुद को कैसे परसीव करती हूँ, ये मेरे फोटोज पर लाइक्स कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं, मैं किस प्रकार से दिखती हूँ, व्हाट इज द वे इन विच फिल्टर्स मुझे अपना चेहरा दिखाते हैं, और एट द सेम टाइम मैं दोस्तों को कैसे ड्रेसअप होते हुए दिखती हूँ, कौन सी चीज़ों के बारे में बात करते हुए देखती हूँ, द इन्फ्लुएंसर्स दैट आई फॉलो या फिर द पीपल दैट आई फॉलो ऑन सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, वो किस प्रकार के ट्रेंड्स कर रहे हैं और उनके साथ कीप अप करना. ये सारी चीज़ें मेरे सेल्फ आइडेंटिटी, मेरे एक्सप्रेशन का बहुत ही बड़ा हिस्सा बन चुका है. और उसके साथ ये भी बातें हैं कि कई बार यंग लोगों के लिए या फिर फॉर एडोलेसेंट्स इवन, हैविंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, being connected to people who are like me, being connected to people who like things, the same things that I like, right? स्पेशली कि वो सेफ स्पेसेस जब भी मेरे ऑफलाइन ज़िंदगी में अवेलेबल नहीं है, मैं ऑनलाइन ज़िंदगी में वो चीज़ें एक्सेस कर सकती हूँ. तो ये एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू स्पेसेस, एक्सेस टू इवन सपोर्ट फ्रॉम एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखा जाए तो. पर अगर ये इम्पैक्ट इसका हम रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करते हैं तो उसका कई हिस्सों में इम्पैक्ट हो सकता है. और मैं एक कहूँगी कि जो चीज़ें मैं बाहर देख रही हूँ या जो चीज़ें मैं सोशल मीडिया पर एक्सपीरियंस कर रही हूँ, उसका इम्पैक्ट, हाउ इज इट इम्पैक्टिंग माई इंटरनल सेल्फ और हाउ इज इट इम्पैक्टिंग द रिलेशनशिप्स दैट आई हैव, बिकॉज दोज टू आर डिफरेंट थिंग्स. जब मैं देखती हूँ कि द वे आई एम कनेक्टेड विद माई फ्रेंड्स, द वे आई एम कनेक्टेड विद माई लव्ड वंस, या फिर द वे आई अप्रोच रोमांटिक रिलेशनशिप्स ऑनलाइन और द प्रेशर टू बी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप from what I witness, my friends, my colleagues, my peers go through, वो एक जो है वो इंटरनल इम्पैक्ट उनको दिखाई देता है. कई बार हम जो फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट, कॉन्स्टेंटली फीलिंग दैट आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड अदर पीपल आर डूइंग मच मोर. या फिर हम कहते हैं कि इस वजह से क्या हो जाता है कि इवन दो वी आर कनेक्टेड, राइट, विद पीपल ऑनलाइन, बट वी आर एट अ पॉइंट इन आवर लाइव्स वेयर वी आर मोर डिस्कनेक्टेड देन एवर emotionally, because we are not necessarily talking about what we truly experience all the time. The pressure to keep up with that digital appearance is very very high. और ये सारा इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप्स पर होने लगता है. हम वो चीज़ें करना चाहते हैं लोगों के साथ जो हमारे सोशल मीडिया प्रेजेंस में अच्छी दिखे, या जिसको कि हम एस्थेटिकली अच्छी दिखे हम कहते हैं, राइट. उसी के साथ साथ आई ड्रॉ माई स्क्रिप्ट्स ऑफ व्हाट शुड हैपन इन माई रिलेशनशिप
based on what I see other people do. कि वो pictures upload करना. Is my relationship valid until the point my partner and I don't post a picture together, right? Is it valid if they don't talk about me, or if there is not a lot of show off of gifts, good things, great things, behaviors that they do for me. तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, who is a good partner, what is a good relationship, what is a safe relationship, what is an aesthetically nice relationship, is all drawn from our interaction and information that we're consuming on these online platforms. और वो सारी चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप्स पे आता है, उसका इम्पैक्ट हमारे इंटरनल सेल्फ्स पे भी आता है. So, constant pressure of coming across as perfect, be it relationship or be it as an individual. I want to look my best, I want to be in a good car. मतलब मैं अगर ओला में छोटी गाड़ी आ गई है तो उसकी स्टोरी डालना नहीं पसंद करूँगा. बट अगर अच्छी गाड़ी में मैं बैठा हूँ तो आई वुड वांट टू पुट अ स्टोरी अबाउट इट. So everything make it look, the life is so perfect. So what is the direct impact of having a fake social perfect life have on relationships? सो मैं इसको इस प्रकार से देखूंगी कि वो इम्पैक्ट ये होता है कि एक सर्टन प्रेशर्स टू और वेरी आइडियाज ऑफ व्हाट इज अ गुड रिलेशनशिप कैन बी वेरी अनरियलिस्टिक, because sometimes it is disconnected than what reality is. And constantly, my experience of relationships can be also very unsatisfactory, because I'm expecting that it is only a good relationship when it is whatever I see my friends do or whatever I see other people do online, right? So it places undue pressure on relationships. But also at the same time, what it can also do is, for people, there are a lot of distractions to disengage themselves, which keep them from meaningfully engaging with people who are present in our lives, either online or offline. एक ये भी चीज़ है कि कई बार वो डिजिटल स्पेस की हमको इतनी आदत लग गई है, या फिर वो डिजिटली हम कंफर्ट है हमें अपने आप को डिस्क्लोज करने का, अपने फीलिंग्स के बारे में शेयर करने का. पीपल में फाइंड इट मच मच मोर ईजियर, जिसको कि हम डिसइनहिबिशन इफेक्ट कहते हैं. We are people are less disinhibited. People are more disinhibited because they can share their true feelings, their internal selves, because there's a bit of a layer. क्योंकि मैं आमने सामने नहीं बैठी हूँ. So it can work both ways for people. Sometimes it can facilitate relationships and it can help them get closer to somebody or get to know somebody in a much better way. But sometimes it can be the other way around, whereby they are not able to connect with this person because there is pressure, undue pressure on the relationship as well. तो एक ये है कि वो डिस्कनेक्ट क्रिएट हो सकता है. दूसरी बात ऐसी भी है कि जब भी हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं, तो हाउ आर वी यूजिंग द social media that we have or digital platforms that we have to connect? Do I use it to be updated about people that I know about? Do I use it for sending a kind comment to somebody, or engaging with information in that manner, or reaching out to people and really connecting with people? Or do I use it जिसको कि हम doom scrolling बोलते हैं, हम कंटेंट स्क्रॉल कर रहे हैं और हमें पता नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं. सो दोज काइंड ऑफ बिहेवियर्स आर मोर हार्मफुल. तो हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है डिटरमाइन करने के लिए कि उसका इम्पैक्ट रिलेशनशिप्स के ऊपर कैसा हो सकता है. Apart from relationships, excess use of social media, how does that impact mental health of a person? तो कुछ कुछ चीज़ें जो हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं, एक है कि मेरा सेल्फ इमेज जो है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि मैं अपने आप को कैसे देखती हूँ, मैं अपने आसपास के लोगों को कैसे देखती हूँ. दूसरी बात ये है कि जब भी हम यूसेज देखते हैं तो उसके कुछ फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है, कि जो हम स्क्रोलिंग की बात कर रहे हैं, हम रिसर्च में ये पाया गया है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो एक्चुअली कंटेंट के साथ एंगेज करते हैं are likely to have positive mental health सोशल मीडिया यूसेज से. बट ऐसे लोग जो केवल, जिसको कि हम डूम स्क्रोलिंग करते हैं, कहते हैं कि मैं स्क्रॉल कर रही हूँ और मैं किसी के साथ एंगेज नहीं कर रही हूँ, मैंने 3 घंटे बिता दिए हैं, आई हैव नो मेमोरी ऑफ व्हाट आई हैव सीन, व्हाट आई हैव लाइक नॉट लाइक. तो वैसे लोगों को नेगेटिव इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा हो सकता है. तो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है? ये हमको दूसरों से आइसोलेट करता है,
ये हमको डिस्ट्रैक्शन जो है, कंसंट्रेशन एबिलिटीज कम करता है हमारी। जो एक कंपैरिजन होता है जो हम अपने आप का दूसरों से करने लगते हैं, उसका इम्पैक्ट होने लगता है हमारे सेल्फ स्टीम पे, हमारे मेंटल हेल्थ पे। फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करें तो आई इश्यूज, बैक इश्यूज, sort of, or you'll have many people who'll have even concerns in terms of carpal tunnel syndrome because वो फोन होल्ड करना है कॉन्स्टेंटली जो हाथ में है। इस प्रकार के भी फिजिकल डायरेक्ट इम्पैक्ट हमको देखा गया है। बट मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें तो ये सारी चीज़ें, डिस्ट्रैक्शन, आइसोलेशन, एग्जॉशन, और उसी के साथ साथ फीलिंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम पीपल। तो भले ही मैं सोशल मीडिया पर जा रही हूँ टू सी what is it that other people are doing, end of the day I leave from there feeling bad about myself, क्योंकि the pressure to portray brilliant things or unique things or the best possibilities of experiences that you are having, there is a constant comparison of what I lack in my life. When I see that's something which can have a powerful impact on our mental health. Right. So, like you mentioned about doom scrolling, I think अगर हम लोग एक लिमिट सेट नहीं करते अपने डे टू डे लाइफ में that 25 minutes or 30 minutes every day I have to give to my social media. If you are spending more time on social media, it automatically converts into doom scrolling. And when a lot of doom scrolling happens, I have noticed this on myself that our concentration levels have drastically dropped. क्या हो गया कि पहले हम लोग 1 घंटे का YouTube वीडियो भी देख लेते थे एक सवाल का जवाब पाने के लिए, बट विद seeing TikToks and reels, we want answers of things in 30 seconds. मतलब अगर कोई explain भी करना चाहता है कुछ, तो like please come to the point. What is the point? Just tell me that point, because I'm so used to watching reels and knowing what happens the entire scene in just 30 seconds that I don't have the patience to read an entire book to know about something. So I think that is certainly a very, very negative impact about just doom scrolling as well. My next question to you is that a lot of people form a lot of people meet other people online and then get into some sort of romantic relationship with them. So how can they make sure that the person that they're speaking to is safe? Because while we see that there's so many cases that people have fallen in love and then they've met and then it's not going the way they've imagined it to be. It was harmful to them physically as well. So what are those points to make sure that you stay safe even if you fall in love with somebody you met on social media? So I want to begin by saying that just because you have met somebody on an online only platform or you've interacted with them in an online only environment doesn't necessarily mean that it's unsafe. But it can be both, right? It can be safe, it can be unsafe also. We are living in a world where um, the chances of you meeting somebody offline is reducing more and more. The way dating looks like today is very different. It's via an app where you swipe left or right based on certain pieces of information that you have access to and some pictures to gauge whether this person would be a good fit. And there are so many people who start relationships online or even end relationships online. So these are relationships which are completely transacted online. Sometimes what does also happen then in that case, very often when people have been in a relationship for 3 months, 4 months in an online only environment, when they have to actually meet somebody offline, there's a lot of fear and there's a lot of anxiety that can come up that will this person actually like me? Right? Without filters. Without filters. And that is not only in terms of because when I'm chatting with somebody, I have much more control over about what I'm saying, how I'm portraying it, how I'm presenting myself, whereas it might be that many lesser barriers when you're doing it in an offline environment. And in fact, those are transitions which these online relationships go through, and people struggle with that. Right? But अगर हम ये safety की बात करें कि कुछ चीज़ें कि it's important, again if there are relationships, it's important to have that offline engagement, conversation, meeting with that person to see whether there is a rapport, what is the connection like. But in addition to that, in general, right, if we're talking about it, be aware of not sharing your private details in terms of your passwords, in terms of your sort of confidential information.
at all times, right? Whenever you're sending pictures or whenever you are having certain conversations, there are many options that your digital platforms offer you, right? In terms of ensuring that screenshots are not taken, ensuring that you're using certain modes like vanish mode or something like that if you're having a sensitive conversation with somebody. आपके जो डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हैं उसके पासवर्ड्स उसके डिटेल्स वो अपने आप तक कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, तो ये कुछ चीज़ें आप अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स के बारे में अगर बात करें तो वो चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है कि इन टर्म्स ऑफ your rapport with that person, take your time to know them. I know that very often there can be a lot of pressure to quickly figure out the person, quickly figure out if this is your life partner, and quickly move on and do great things with your life. But it's really important to take your time to get to know that person, have that period where you're slowly discovering things about each other, getting to know about difficult parts, figuring out how to work through conflicts. I think these are all these aspects जिसको समय लगता है जो आपको देना ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें हमारे सेफ्टी के लिए अगर हम ध्यान में रखें, so we may be able to make most of some of these relationships. Wonderful. And how can we actually use social media to build meaningful connections and also promote mental well-being? तो अगर मीनिंगफुल कनेक्शंस की बात करें तो आई विल स्टार्ट बाय द एस्पेक्ट ऑफ बीइंग स्टोरी। अगर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, सो उसका इस्तेमाल हमको नॉट कि जस्ट टू एक्सेस वट एवर कंटेंट, be a little bit purposeful or be a little bit intentional about why are you accessing this content, right? So maybe खुद को सवाल पूछना कि why am I using this? Am I using this to put my content out? Am I using this to connect with my family and friends? Am I using this to just see what people are doing? So वो करना ज़रूरी है। Use these platforms to intentionally engage with things that are both, right? Sometimes I remember हम पैंडेमिक के दौरान लोग कहते थे कि वो न्यूज़ में नंबर पढ़ पढ़ के या फिर चीज़ें बात कर देखते हुए या फिर इतनी डेथ्स हुई, इतने नेगेटिव चीज़ें हुई, इतने लोग का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, दिन भर वही पढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ जाता है। तो हमको ध्यान रखना है कि हम पर्पसफुल यूसेज करें, लिमिटेड समय के लिए यूसेज करें। कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर रिपोर्टिंग कंटेंट, हाइडिंग कंटेंट, चाइल्ड सेफ्टी, इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स ऑप्शंस दिए गए हैं, उसका इस्तेमाल करें अपने सेफ्टी के लिए। और इन एडिशन टू दैट, व्हेन यू एंगेजिंग विद अदर पीपल, बी काइंड टू देम, बी माइंडफुल ऑफ आप किस तरह से लोगों से एंगेज कर रहे हैं। मेक श्योर यू डोंट कंट्रीब्यूट टू एनी साइबर बुलिंग या फिर साइबर वायलेंस टू मेक दैट प्लेटफॉर्म अनसेफ फॉर समबडी एल्स। I guess these are some of the things that we can keep in mind to make sure that our usage with social media is on a healthy terms. That is so true that being kind to people and putting yourself in their position is so important. Just because somebody is a celebrity or popular face or you do not know them, you cannot actually create a fake account and say whatever you want to, because ultimately at the end of the day even they are human and it hurts them as well. So अगर कोई इस तरीके की सिचुएशन से गुजरता है which is not so pleasant on social media, so is there any specific platform or a book or a website which they can refer to in terms of learning how can they cope up with such situations? So one, I'll say that of course there are some helplines and some places where you can report any kind of cyberbullying or cyber abuse, and you'll have access to some of those numbers as a part of this podcast. We'll share those resources with you all. But in addition to that, कि प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, वहाँ पर भी कुछ हेल्प सेंटर के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, वो उसका आप इस्तेमाल करिए अपने आप को सेफ रखने के लिए। बट इन एडिशन टू दैट, हमारी तरफ से कौन सी इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं, वो डिजिटल सेफ्टी की जो बात है उसकी भी कई सारे इंटरनेशनल गाइड्स, रिसोर्सेज अवेलेबल है जिसके लिंक्स हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। बट खुद को कैसे सेफ रखा जाए इसका हमें कॉन्स्टेंट थॉट रखना जरूरी है। तो हाउ मच ऑफ योर लाइफ आर यू पुटिंग ऑनलाइन, एंड व्हेन यू आर पुटिंग इट ऑनलाइन वी हैव टू अज्यूम कि whatever you are sharing online, assume that it's public information. This is something that everybody will have access to, safer. If you're comfortable with that piece of information being there, even if it is in a chat, then you put it up online. So that is a marker to keep in mind. So That's that's scary.
It is scary, and I think, as you said, that with great power comes great responsibility. But if we have the power to be able to share all parts of our lives, it's also important that we be responsible about how they are being portrayed, what is being shared, because we may not have control over all this, that how it might be used or abused by someone. So that's something that we have to keep in mind. Fantastic. So I'm really hoping that we are able to help with some more details, with some websites and with some telephonic numbers where our users can reach out if they're facing any sort of this problem. Once again, thank you so much, Sanuja, for being on the show. And you always bring some extra sort of information, extra light, and extra brightness to this show. Thank you so much for your valuable time and your guidance. We're very, very happy that you could be a part of this show. Thank you so Thank much you. for having me. Thank you. So this was a second podcast, and I think this piece of information was extremely, extremely useful. We all can dig into it a little more and be a little more kinder, be a little more gentle, and use social media to grow yourself, not to pull somebody else down. So this is your host Dara Singh Khurana saying goodbye, and I'll see you soon again. Thank you.